Good morning, children. How are you? Welcome to the psychology classroom. So, children, we are doing the revision. I hope you are also doing the revision. Children, obviously you all are a board student. So, you all have to work very hard this time. Thirdly, you all are giving the RTs also. So obviously you all are doing the revision. So revise properly each and every concept. I am doing the revision with you all, the chapter attitude and social coordination. This is the chapter I am discussing with you right now, where if you have seen the yesterday video, I am discussing with you the factors influencing attitude change. So which is still left, and I said you to that I continue in the next video. Factors influencing attitude change. I discussed with you there are mainly 4 factors which influence and which bring change in the attitude of the person. The first factor is characteristics of an existing attitude. Second is source characteristics. Third is message characteristics. And fourth is target characteristics. So these are some of the characteristics of these are some of the factors which influence the attitude change. Where I had discussed with you the first part, what are the characteristics of an attitude and how it is influencing the attitude or how it is bringing a change in the attitude. Then 3 points are left: source, message and target. Firstly, you should know about what is source and target. I already discussed with you, target वो होता है जिसके attitude को हमें बदलना है, whose attitude is to be changed, and source वो है जिसकी वजह से target के attitude में change आ रहा है. Source is the person which bringing a change in the attitude of the target. So if the source is bringing a change, अगर source change ला रहा है, so it means source is something a powerful person.
सो ऑब्वियसली उसकी भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी होंगी जो कि डिटरमाइन करेगा कि टारगेट अपने एटीट्यूड को चेंज करेगा या नहीं करेगा. इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. Now the second point or the second factor which influence the attitude change is source characteristics. यानी जिसकी वजह से एटीट्यूड में चेंज आ रहा है उसकी ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, what the source characteristics possesses which may lead to bring change in the attitude of an individual. So what are the source characteristics? तो source के two important characteristics हैं. The first is the source. First, the source attractiveness, and second is credibility. सोर्स के टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच may lead to change and bring change in the attitude. Source attractiveness and source credibility. ये दो फैक्टर ऐसे माने जाते हैं जिनकी वजह से पर्सन के एटीट्यूड में चेंज आ सकता है. अगर सोर्स अट्रैक्टिव है, क्रेडिबल है, so maybe it is a possibility that the target will change the attitude under the influence of the source. This is one of the example in order to prove this attractiveness and credibility. You can see in your NCERT book also there were two pictures are shown. In one of the picture, both the pictures are related to the shop of any device, laptop we can say. किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप, a kind of इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं. In one of the shop the devices are shown by a child to the customer, and in another shop that devices are shown, the same devices are shown to the customer by some professionals. Whom you will consider that किससे ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होंगे या फिर they will bring a change in their attitude or what? So but obvious the answer of this question is the second one, where it was sold by some professionals. ठीक है, जो डिवाइस है वो कौन सेल कर रहा है? इट वॉज सोल्ड बाय सम प्रोफेशनल. Attractiveness and credibility. So this is the two important source characteristics which may influence the target to change their attitude. Fine. Now the third factor, which is message characteristics. But obviously, in order to bring a change in any person, in order to bring a change in the attitude of the individual, it is very important that what message we are conveying. Is message is something reliable or it is good or not? मैसेज जो हम कन्वे कर रहे हैं वो कैसा है, वो सही है? अगर वो सही है तो पर्सन अपने एटीट्यूड को चेंज करेगा. इफ द पर्सन फाइंड इट अप्रोप्रिएट टू चेंज. सो मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो डिटरमाइन
attitude change. Understood? Message characteristics. Now, what are the message characteristics? I told you source characteristics. Source के feature मैंने बताया, attractiveness and credibility. Two are there. Now, message characteristics also. It also divided into two parts. First is the motive. What is the motive of that message, and second is the mood. ये दो चीजें मैसेज के डिटरमाइन करेंगी. मोटिव ऑफ द मैसेज, जो मैसेज हम दे रहे हैं उसका मोटिव क्या है, एंड देन मोड ऑफ द मैसेज. मैसेज का मोड क्या है, किस मोटिव क्या है, रीजन क्या है, और किस मोड से वो मैसेज हम दे रहे हैं. ये हो गया क्लियर. मोटिव में अपील कैसे कर रहे हैं, रैशनल अपील है, इमोशनल अपील है, तो ठीक है. रैशनल है अपील, इमोशनल अपील, ठीक है. जो मैसेज है विच आई एम गिविंग टू एनी पर्सन and I am thinking that the person will bring a change in his or her attitude, and that message is something having a rational appeal or emotional appeal. अपील जो है वो रैशनल हो रहा है, यानी लॉजिकल है, रीज़न है उसके पीछे. इमोशनल अपील है. इमोशनल का मतलब ये हुआ कि इट हैज़ सम इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑल्सो, लाइक केयरिंग. Emotional aspects means it is something related to care, love. So the people will always bring a change in their attitude. Then which mode, हम जो मैसेज दे रहे हैं, the message which we are providing it from which mode, किस मोड से कह रहे हैं. We send a letter, we send any kind of mail, we directly saying to the person what we are doing, what is the mode. In your book also another picture was there, you can see that picture. There were the two pictures in which the person is there who is telling about the like ORS. ORS is very good फॉर डिहाइड्रेशन. अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है बच्चों में तो उनको हमें WHORS देना चाहिए. तो ये इंफॉर्मेशन जो है हम ये जो मैसेज है हम किस मोड से दे रहे हैं. सो वन पिक्चर वाज दैट दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम द मोड ऑफ रेडियो. देयर वाज अ रेडियो ऑन विच दिस मैसेज इज कमिंग, and everybody sitting over there, they are listening it. And in the another picture, the person has put up a campaign in the village or in that particular area. एक कैंप पर बना दिया है, कैंप में, और on the loudspeaker they are providing this message. So what is the mode of message that very much influence the person to bring a change in the attitude. And इसको और भी बेटर कर सकते हैं. कैन बी मोर बेटर व्हेन इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन गोज टू home on an individual basis to everyone and telling them about the benefits of the ORS. So क्या होगा, और भी इफेक्टिव हो जाएगा. सो मैसेज कैसे दिया जा रहा है, आप किसी को सिर्फ मैसेज टेस्ट कर दे रहे हो या वर्बली उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, that very much create a difference and leads to the attitude change. Is it clear? Message characteristics: rational appeal, emotional appeal, motive of the message
और मोड ऑफ द मैसेज. मोड ऑफ द मैसेज, आई होप इट इज क्लियर. नाउ द मोटिव मीन्स होता है जो भी मैसेज आप दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गिविंग द मैसेज टू एवरीवन दैट वी शुड प्लांट अ ट्री, वी शुड मेक अवर इन्वायरमेंट ग्रीनरी. सो ये जो अपील है आपकी वो रैशनल है. रैशनल कैसे है कि इफ़ यू प्लांट अ ट्री, द ट्री विल प्रोवाइड यू ऑक्सीजन, यू विल गेट द फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, शेड एज वेल, obviously. So it's something a rational appeal. Emotional also, when you give love and care to anyone, so in return also you get it the same way. So emotional appeal is, so everybody will convince it. So the motive of the message is also very much determine the person to change their attitude or not. Okay, fine. Is it clear? Rational appeal or emotional appeal, motive and mode. The one of the example is given in your book of the pressure cooker. Like somebody is selling the pressure cooker and convincing the person that in making the food in this one, your fuel will be saved, okay, your gas will be saved, and in cooking the food in this one will provide you the protein in your food, which is so which could be healthy for the individual, and the person will eat healthy things. So that is also a kind of emotional appeal. So the motive of the message and is both rational appeal as well as the emotional appeal. So these two factors determine to bring the change in the attitude, rational appeal as well as emotional appeal. So I hope it is clear to you all, children. So similarly in that message also, like if the person is having a tendency that okay, in cooking the food in the pressure cooker is saving my fuel, my gas, as well as it is making or preparing the food in pressure cooker will be healthy for my family. So people will easily convince toward the other person and definitely will bring a change in the attitude. So these are the things which you should keep it in mind. So message characteristics, the message which was delivered to you, that very much determined to bring change in the attitude, and the source characteristic. Source is the person who is influencing the target to bring a change in the attitude. So that also determined. Is it clear? Okay. Now moving toward to the next factor, and the last factor is the fourth one, target characteristics. Target characteristics. So these are some of the factors which influencing the attitude change. Source characteristics, the source जिसकी वजह से there was change coming under the target. So उसकी characteristics like उसका attractiveness, credible होना ज़रूरी है in order to bring a change in the attitude. Source characteristics by message characteristics that also influence to bring the change in the attitude. And last but not the least is the target characteristics. In the message characteristic, you should keep it in mind that which mode and what is the motive or the message. These two things very much determine. Now target यानी जिसकी attitude को आपको बदलना है, whose attitude is to be changed. टारगेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिससे कि एटीट्यूड में चेंज आएगा या नहीं, ये भी बहुत डिटरमाइन करेगा. सी मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, मैंने ये बताया कि सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्स के ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
जो एटीट्यूड को बदल सकते हैं। मैसेज के ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं? एटीट्यूड के खुद के भी फीचर होते हैं जो कि बहुत हद तक डिटरमाइन करते हैं एटीट्यूड टू बी चेंज और नॉट। सिमिलरली जिसकी एटीट्यूड को बदलना है उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करती है, नो डाउट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट ऑल्सो डिटरमाइन द एटीट्यूड चेंज। आपका जो टारगेट है वो कैसा है, उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे पर्सुएबल है या नहीं, persuability. There are some factors behind it. Persuability, intelligence, persuability, intelligence, persuability, intelligence, self-esteem. ठीक है, these are some of the factors which are influencing the attitude change. Please write down it. So I hope you all have written down these 3 points. So how these are going to determine the attitude change? Firstly, self-esteem. Self-esteem means a self-confidence. That is a self-esteem which bring a change in the attitude. Self-esteem. It has been found that a person who is having a high self-esteem, अगर कोई पर्सन है जिसकी सेल्फ-एस्टीम अगर हाई है तो वो अपने एटीट्यूड को जल्दी चेंज नहीं करता। A person who is having a high self-esteem, a very high self-confidence, तो उनके एटीट्यूड को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है in comparison to the person who are having low self-esteem. अपने पे कम विश्वास है, कॉन्फिडेंस कम है, तो उनके आप एटीट्यूड को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हो। बट अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई नहीं, मैं तो जो बोल रहा हूँ बहुत सही है, मैं कभी गलत नहीं बोल सकता, तो अगर इस तरह का कोई एटीट्यूड है तो वो चेंज होना डिफिकल्ट है। सिमिलरली द पर्सन हु इज नोन टू बी वेरी हाई इंटेलिजेंट, बहुत हाईली इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, तो ऐसे लोग को तर्क चाहिए होता है। दे रिक्वायर द रीजनिंग, दे रिक्वायर द एनालॉजी, दे रिक्वायर द लॉजिकल थिंकिंग, सो दे रिक्वायर अ वैलिड रीजन टू ब्रिंग अ चेंज इन देयर एटीट्यूड एंड दैट दे एक्सपेक्ट दैट शुड बी प्रूवन ऑल्सो। हाँ, उसको आप प्रूव भी कर सको। पर्सुएबिलिटी, पर्सुएबल मीन्स जो थोड़े से हाईली पर्सुएबल, यानी जो पर्सुएबल मीन्स रिलेटेड टू फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो फ्लेक्सिबल है तब तो ठीक है, बट इफ एनी पर्सन इज वेरी रिजिड टुवर्ड देयर एटीट्यूड तो उनके एटीट्यूड को चेंज आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी मच डिटरमाइन। देन एक होता है प्रेजुडाइज। If the person is, if your target is holding a prejudice, prejudice means always negative. Prejudice negative होता है, negative attitude. अगर किसी ने कोई negative attitude रखा हुआ है तो वो भी strong है, ये जो prejudice है वो strong है, so it is something difficult to change. किसी ने कोई भी चीज़ को लेके एक नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म किया, वो बहुत स्ट्रांगली फॉर्म है, तो इट इज़ समवेयर डिफिकल्ट टू चेंज। बहुत से लोग होते हैं जो स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइज रखते हैं और उनके एटीट्यूड को बदलना थोड़ा हार्ड होता है। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट विच इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड चेंज। So today with this video I completed the revision of this topic also.
I hope you understand it. Still, if you find any doubt in this topic, you will discuss with me in the classroom. Okay, thank you children.